चलो, सो लास्ट क्लास में वी डन अबाउट रेजोनेंस वगैरह, उसका एप्लीकेशन ओनली, ट्यूनिंग ऑफ ए रेडियो रिसीवर, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ वी आर लर्निंग. So these are the things we have to learn. रेडियो आपको कैसा रिसीव करेगा, लाइक हाउ यू आर एबल टू रिसीव द चैनल्स फ्रॉम वेरी फार डिस्टेंसेस. I don't you are seeing tuning of radio receiver. Okay, चलो. Now first we'll study about tuning of a radio receiver. Okay, so देखो, radio signals are transmitted by different stations at different frequencies. देखो 93.5 एफएम वाला एक फ्रीक्वेंसी है, 92.7 वाला एक फ्रीक्वेंसी है. एक एक स्टेशन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में से फ्रीक्वेंसीज जनरेट कर रहे हैं. ओके, एंड आप कार में बैठा है, रेडियो में आपका एंटीना रहेगा, आपका एंटीना रहेगा, राइट. सो वो एंटीना के पास वो फ्रीक्वेंसीज आर कमिंग इन द एंटीना. एंटीना के ऊपर आपको, मतलब आपको 93.5 एफएम भी है, 92.7 है, ऑल जो भी है वो उधर है एंटीना के पास. ओके, देखो, रेडियो सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड बाय डिफरेंट स्टेशंस एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. मान लो एंटीना, आपका रेडियो का एंटीना है, इसके ऊपर व्हाट इज हैपनिंग, देखो, ऑल दिस फ्रीक्वेंसीज आर पिक अप बाय द एंटीना, and corresponding to these frequencies a number of voltages appear across radio circuit. A radio circuit is nothing but LCR circuit only. आपका रेडियो में जो भी नॉब घुमा रहा है ना, यू आर चेंजिंग CNL, चेंज कर रहा है इनडायरेक्टली, और चेंजिंग द CNL वैल्यू. ओके, सो इसमें क्या होगा, सो सपोज दिस एंटीना, इसके ऊपर वोल्टेजेस विल बी इंड्यूस्ड, करस्पॉन्डिंग वोल्टेज विल बी इंड्यूस्ड. सो दिस 93.5 एफएम का एंड 92.5 एफएम का, these are frequencies. Corresponding voltages will be appear across the your antenna radio में. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मालूम है ना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एफ नॉट इज इक्वल टू 1/2π√LC, राइट. मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस. आप जो नॉब घुमा रहे हैं ना, कैपेसिटेंस विल चेंज, मेजरली कैपेसिटेंस विल चेंज, उसके वजह से द फ्रीक्वेंसी विल चेंज. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, आप चेंज करते जा रहे हैं, उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इज गेटिंग चेंज. आप 93.5 एफएम मतलब चेंज करके 93.5 बन जाएगा ना, दैट एंड दिस एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी विल मैच एंड इट विल वाइब्रेट विथ लार्जर एम्पलीट्यूड. Okay, that songs we can able to hear in our antenna. Okay, so all frequencies ka corresponding voltages are there, but when we move the knob to the corresponding frequency and वो रेडियो से जो आया frequency and हमारा resonant frequency दोनों match होने के बाद it will resonate, it will vibrate with larger amplitude, and then only we can able to see listen the songs. देखो, the radio circuit is a series LCR circuit. By turning the knob of the radio, we adjust the values of capacitance. This changes the resonant frequency of the circuit. So formula is F naught is equal to 1/2π√LC. EC ब्रांच लिया तो इसी में सब कुछ आएगा, फ्रीक्वेंसीज, एंटीना से किधर से क्या आएगा, हाउ टू केबल से कैसे सिग्नल जा रहे हैं, एवरीथिंग वी कैन नो इन EC इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंजीनियरिंग में. ओके, इसी का थोड़ा एक्सटेंशन है क्वालिटी फैक्टर वगैरह. ओके, और देखो, although the voltage corresponding to all frequencies are induced in radio circuit, but the maximum current is obtained for
that frequency which matches the resonant frequency. जो भी हमारा जो भी नॉब घुमा रहे वाला frequency matches with that original frequency, then only it will start vibrating with a larger amplitude. and आपको suppose you are घुमा रहे 93.5, 93.5 FM का magnitude will be large and remaining 92.7 वगैरह तो small रहेगा. So this only we can able to hear. Okay. So at resonance, you understood that it is acting like a purely resistance circuit. When RLC circuit में purely resistance circuit. So phi value कितना होगा in a purely resistance circuit resonance में? Phi is the phase difference between voltage and current. Okay. So since resistance में purely resistance में the voltage and current का same phase में है, that's why angle is 0 and cos 0 is 1. Okay. Now we'll calculate maximum power at resonance में maximum power will be there, right? That maximum power कितना है? That one we have to see. No? Okay. Now the power output of the circuit for maximum current, I not max का उस time में maximum current will flow right at resonance में. At that time में what is the maximum power? Okay. So power का average power का formula क्या है? VRMS into IRMS into cos phi. Okay. I want to convert in terms of current में IRMS, V equal IR, right? So IRMS into resistance into IRMS into cos phi. Phi is how much? Since it is acting like it resonance में, right? Resonance में phi is 0. So cos 0 is 1. So P is equal to IRMS, I square RMS, R, right? Now I want in terms of peak value. We know this one, right? IRMS is I naught by root 2. I naught max बोलता हूँ. I naught max by root 2. Okay. Whole square is there, whole square लगा रहा हूँ into R. So therefore maximum power, this is the maximum power, right? At resonance, maximum power will be I naught max square by root 2 whole square is 2 R. This is the maximum power at that time in the radio circuit. So at resonance time में the maximum power will be this much in the resonance. Okay. Now उसमें half power also very important. Half power वाला. Okay. देखो. I naught max is the maximum current at resonant current. Find the current for which the power is half of the maximum power. So we have to find the current at which the power is half of the maximum current. P is equal to P max by 2. In this condition में we have to find the value of current. P max का we all just now we derived, right? And P का formula I square RMS into R is equal to P max कितना था? I naught max square R by 2. This is the maximum power, right? The maximum power derived by 2 is there. In this condition में I want to find I naught कितना है in this condition. कब का half the power में कितना है? Okay. So convert into this one. I naught by root 2 whole square into R is equal to I naught square maximum R by 4. So if you solve, कितना होगा? I naught is how much? So इसका square is 2. 2 to cancel. So I naught square R is equal to I naught square maximum times R by 2. So R cancel.
देयरफॉर आई नॉट इज इक्वल टू कितना होगा, ये अंडर रूट क्या, तो आई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर मैक्सिमम, हाँ, और रूट में निकल जाएगा ना, बाई √2, मतलब हाफ द पावर में इतना करंट है। ये दोनों इंपॉर्टेंट अभी कर्वेचर में। नाउ वी आर ड्राइंग द करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। लास्ट क्लास में वी ड्रू, दैट इज इन्वर्टेड ऑफ द जेड, राइट, जेड का इन्वर्टेड आया ना, सो उसका ग्राफ वी आर ड्राइंग। सो ये दोनों याद रखो, आई आई मैक्स बाई √2 एंड करंट का फॉर्मूला विच वी डिराइव्ड बिफोर वाला इज आई नॉट मैक्स, आई नॉट मैक्स का भी वी डिराइव्ड, राइट। नाउ फिनिश ना। Now the frequency corresponding to I naught max by √2 also a considerable high power, half of the maximum power, and these signals will interfere this resonance signal. देखो, so I am drawing the current versus frequency का graph. I naught versus frequency. Actually, we saw the graph is like this, right? And this का corresponding one is nothing but F naught, resonant frequency, at the peak point. And at that resonant frequency, what is the current, maximum current? I naught max current we got. Okay. Now, ये वाला जो half P max, right? Now half power वाला P max by 2 में corresponding current कितना था? P max में by 2, how much we got? I naught max by √2. We got this one. Okay, this half power, why half power means आपको ये सिग्नल्स भी आपको इंटरफेयर हो रहे हैं. हाफ पावर फ्रीक्वेंसी इज आल्सो इंपॉर्टेंट. ओके, सो पावर मैक्स ओनली दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का पावर नहीं है, हाफ पावर तक वी हैव टू टेक केयर ऑफ. ओके, दैट्स व्हाई दिस गैप इज कॉल्ड बैंडविड्थ. दिस इज कॉल्ड बैंडविड्थ. ओके, एंड उसका करस्पॉन्डिंग फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को F1 बोलते हूँ एंड इसका फ्रीक्वेंसी को F2 बोलता हूँ. सी आपको चैनल्स में 93.5 FM के बाद क्या आएगा? एनी टाइम रिजॉर्ट और 92 आगे वाला, बिफोर वाला 92.7 है ना, 92.7, 93.5. Why that much gap? Why they can't put 92.8, 92.9? The signals which are coming exactly from the station में, it is not particular exact 93.5 नहीं आ रहा है. एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर कमिंग. मतलब एक ही स्टेशन में से 93.49, 93.43, 90. ऐसा कुछ आ रहा है, पूरा रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज विल बी कमिंग. ओके, नाउ दैट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज में से वी विल टेक दैट, मतलब ये दैट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज का ग्राफ ड्रॉ किया तो बैंडविड्थ बोलते हैं. अगर हम लोग कुछ बैंडविड्थ नहीं दिया तो क्या होगा? सपोज वी पुट ए स्टेशन 92.7 के बाद 92.8 लगा दिया, तो ये वाला ये फ्रीक्वेंसीज एंड वो फ्रीक्वेंसीज विल इंटरफेयर एंड आपको गाना अच्छे से सुनने देगा. यू विल गेट डिस्टॉर्शन, ऐसा गाना नहीं सुनेगा. दैट्स व्हाई व्हेन यू टर्निंग द नॉब एक्चुअली इन कार में 93.5 FM के बाद 95 पॉइंट समथिंग आने टाइम में आपको साउंड आएगा, बोल के साउंड आएगा. बाद में एक ही बार गाना आएगा. ओके, दैट इज द बैंडविड्थ विल बी गिवन. कंपल्सरी बैंडविड्थ देना पड़ेगा, मिनिमम बैंडविड्थ. ऐसा नहीं कि इतना बड़ा बैंडविड्थ नहीं देने का, मिनिमम बैंडविड्थ देने का, सो दैट the signals will not interfere, because it is this signals also will have the half the power frequencies will be there, half the power max is there, right? Okay, now I will draw the graph for in terms of omega, and we'll have a formula. Understood that bandwidth बोल के? Okay, now देखो, for sharp turning, sharp resonance bandwidth should be small. थोड़ा बैंडविड्थ छोटा रहने का, इतना बड़ा ज्यादा नहीं रहने का. ओके, सो इफ आई ड्रॉ इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, सो क्या था? वी गॉट दिस वन, राइट? आई कॉल दिस एज ओमेगा नॉट, इस एज ओमेगा 1. इन टर्म्स ऑफ ओमेगा मैं एम राइटिंग ओमेगा 2, एंड आई एम ड्रॉइंग द करंट वर्सेस ओमेगा, एंड यू नो दिस वन इज आई नॉट मैक्स, एंड हाफ पावर वाला
I naught max by root 2. I naught max by root 2. Half power frequencies also will interfere. That's why bandwidth dega compulsory. Okay. And I call this as delta omega, change in omega, and this also delta omega. And complete one is nothing but bandwidth. And delta omega का formula है R by 12 and इधर भी R by 12. Okay. Now इसका formulas आपको लिखनो, very important. And here bandwidth is what? Bandwidth is 2 times of delta omega, right? 2 times of delta omega. So लिखो. So omega 1, omega 2 are called as half power frequencies. Half power frequencies. And omega 2 minus omega 1. Omega 2 means 0 से omega 2 minus omega 1. That's the bandwidth. Omega 2 minus omega 1 is called bandwidth. And omega 1 का formula है, omega 1 is omega naught plus, sorry, omega naught minus R by 12. Minus R by 12. देखो ओमेगा 1 मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर, सो क्या आएगा, ओमेगा नॉट माइनस R by 12 क्या, तो ओमेगा 1 आएगा, राइट. ओमेगा 2 विल बी ओमेगा नॉट प्लस R by 12. And omega 2 minus omega 1 is nothing but bandwidth. Is nothing but 2 times of delta omega is the bandwidth. So formula derivation की जरूरत नहीं है, इसमें simply omega 1, omega 2 and bandwidth क्या है, they will ask bandwidth क्या है बोलते, you have to find omega 1, omega 2 and subtract करो, we'll get bandwidth. And here how much, 2 times of delta omega is how much, if you subtract, how much, R by L आएगा, right? R by L is the formula, bandwidth. Omega 2 देखो subtract करो and take LCM, will get as R by L. चलो. Now we'll see the quality factor. Quality factor describes the sharpness of the resonance curve. Sharpness decide करेगा, मतलब which is more sharp resonance, Q1 is 10 and Q2 is 200, means which one will have more sharpness, means 200 will have more sharpness. Quality factor decides the sharpness of the curve, कितना sharp है. Okay, higher the quality factor, more the sharp is the resonance. And quality factor का formula है resonant frequency by bandwidth. Okay, resonant frequency को ओमेगा नॉट बोला, bandwidth को I told you as omega 2 minus omega 1, right? Omega naught is the resonant frequency, by bandwidth is omega 2 minus omega 1. Now if you solve, कितना होगा, tell me. ओमेगा नॉट का फॉर्मूला क्या है, 1 by root LC, क्या देना, 2 by 1 by 2 by root LC, right? Omega naught is 1 by root LC. Okay, by omega 2 minus omega 1 is R by L. So if you reciprocal, कितना आएगा, 1 by root LC into L by R, right? Now मैं क्या करूंगा, आपको रूट एल इंटू रूट एल विल मल्टीप्लाई, कितना होगा, रूट एल बाई रूट एल. सो करो कितना होगा, रूट एल क्या था, सो रूट एल, ये वाला रूट एल कैंसिल हो जाएगा, सो विल गेट एज 1 by R, इसमें रूट बचेगा ना, तो मेरा इस रूट एल इट कैंसिल, एंड एल को क्या लिख सकता हूँ, रूट एल इंटू रूट एल, 1 रूट एल कैंसिल, सो रूट एल बचेगा एंड रूट सी बचेगा, अंडर रूट एल बाई सी, 1 by R under root L by C. This is the formula for quality factor. 1 by R under root L by C. So quality factor will decide.
एंड देखो इनवर्स रिलेशन विथ रेजिस्टेंस, from this lower the resistance, more the quality factor, more the sharpness. So का बेटा, सो आपको लास्ट ये ट्यूनिंग ऑफ थिंग्स में आपको क्या क्या चाहिए? देखो व्हाट इज द फॉर्मूलास वी हैव टू नो. बैंड विड्थ, फर्स्ट वन इज बैंड विड्थ. बैंड विड्थ कंपल्सरी आपको बैंड विड्थ चाहिए, दैट इज 2 times of delta omega, nothing but omega 2 minus omega 1, nothing but r by l is a bandwidth we learn. And second one is half power frequencies, half power frequencies, because of half power frequencies only bandwidth came, वो भी इंटरफियर हो रहा है बोल के. ओके, ओमेगा 1 is omega naught minus r by 12, and omega 2 is omega naught plus r by 12. Okay, and third one is quality factor, and quality factor का फॉर्मूला है resonant frequency by bandwidth, omega 2 minus omega 1 is nothing but 1 by r under root l by c. These formulas are important. They will not go depth में, they will ask that formula based questions only in this. And omega naught, you know, right? 1 by omega naught is 1 by root LC. Resonant frequency क्या होगा? 1 by 2 pi root LC. Right? This formula should know. No question करो. करो. A sinusoidal voltage of peak value 10 volts is applied to a LCA circuit. Resistance is given, capacitance is given, L is given. Quality factor, bandwidth, and omega 1 minus omega 2. Nothing but this way we have to find omega 1 minus omega 2. Omega 1 and omega 2 फाइंड करो, देन सबट्रैक्ट कर सकते हैं. ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 करो. So quality factor first find. एक काम करो, ओमेगा 2 एंड ओमेगा 1 बोल के बोलो, देन बैंडविड्थ भी आ जाएगा आपको. Quality factor is 100. Quality factor is 100. Okay. 2 omega delta omega is 10. 10. Okay. And the third one is Omega 1 and omega 2. I want. omega 2 is 10 power 3 minus 5, and omega is 1 is 10 power 3 plus 5. Plus 10 power 3 is 1000, right? 1000 minus 5 is 995. 1000 plus 5 is 1005. Okay. So bandwidth ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेगा, कुछ नहीं है, that formula based. Okay. Now last one is transformer.
ट्रांसफॉर्मर आपको इजी है, बहुत इजी है। आपको मालूम है ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा? टेल में, आउटसाइड ट्रांसफॉर्मर रहेगा ना घर के सामने, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रांसफॉर्मर? क्या करेगा ट्रांसफॉर्मर? Distributes voltage. डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, इट ट्रांसफॉर्म्स द वोल्टेज, मतलब इट कैन इंक्रीज द वोल्टेज और डिक्रीज द वोल्टेज। ओके, सो ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म्स द वोल्टेज। ओके, मतलब आपको लो वोल्टेज आएगा और हाई वोल्टेज से आ रहा है। हमारे घर में क्या चाहिए? 230 वोल्ट चाहिए, बट द वोल्टेज विच इज कमिंग फ्रॉम सबस्टेशन इज 11 kV. So they will put a transformer. That 11 kV is converted to 230 volts directly, and that 230 volts is given to the our house. If there is no transformer, 11 kV there तो पूरा उड़ जाएगा, बट उड़ जाएगा पूरा. That's why transformer is necessary to increase the voltage or decrease the voltage. अगर अगर voltage increase कर रहे तो that type of transformer is called as step up transformer. If the voltage is decreased, Sathik, listen. If the voltage is decreased, that type of transformer is called as step down transformer. Okay. So, Liko, a device that transforms voltage, a device that transforms voltage from one form to another, one form to another of greater or smaller value, another of greater or smaller values. ओके, उसका वो एक ही काम है, वोल्टेज को इंक्रीज करो और डिक्रीज करो, दैट्स इट। ओके, और वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, द टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर कॉल्ड स्टेप अप, एंड डिक्रीज में स्टेप डाउन। ओके, a transformer works with alternating current only, AC, that's why they put in AC chapter. Okay, DC में अगर होगा तो वो बर्न हो जाएगा पूरा। A transformer transfers electric power from one circuit to another, मतलब indirectly power is getting transferred from one circuit to other circuit. It can raise or lower the voltage in circuit, but with a corresponding decrease or increase in current. वोल्टेज को, पावर को कांस्टेंट बनाएगा, सो वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे तो करंट को ऑटोमेटिक डिक्रीज करना पड़ेगा। ओके, सो दैट फंक्शन इज डन बाय द ट्रांसफॉर्मर, एंड इसका बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन व्हिच वी स्टडीड इन फैराडेस लॉस। डन। ओके, नाउ विल सी इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग क्या है, विल सी। देखो, प्रिंसिपल तो मालूम है आपको, म्यूचुअल इंडक्शन से काम करेगा। सो इट लुक लाइक, ट्रांसफॉर्मर विल लुक लाइक दिस। सो दिस अ ट्रांसफॉर्मर, इधर 3 डायमेंशनल रहेगा ऊपर, दैट्स व्हाई आपको आगे एडी करंट्स आएगा, दैट्स व्हाई दे विल पुट लैमिनेशंस पूरा। ओके, सो हियर आई विल पुट ए वाइंडिंग, इज कॉल्ड your number of turns in the primary, this coil is called primary. Okay, wherever you are giving the alternating voltage, that supply को we call as primary voltage बोलते हैं, and primary voltage को we call as EP, and इस coil को primary coil, primary coil, and input voltage को EP because voltage at primary, EP, and number of turns को NP बोलते हैं, NP बोलते हैं। नाउ इसका इसका संबंध नहीं है इधर, coil again I turn it, if I increase the number of turns more in the left side,
the voltage will increase. If the number of turns is decrease, the step down हो जाएगा, voltage decrease based on the number of turns only, will increase and decrease होगा. Here I am giving to the external load circuit. Load means वो घर को किधर भी दे सकते हैं पूरा. Transformer output will given to the house. Okay. And इसका turns को number of turns of secondary बोलते हैं. So what is happening when you, this is nothing but soft iron core. Soft iron core. Okay, lamination should be done to reduce the eddy currents. Okay, so what will happen when you on the switch, the current start flowing in the coil. You know, this is acting like a solenoid. The current is acting like solenoid, and you know, whenever there is a current in the solenoid, there is a magnetic field is generated. Okay, that magnetic field will be linked with this coil. Okay, will is linked with this coil, and that magnetic field is changing or not changing, because current is changing. That's why magnetic field is changing. Whenever the change in magnetic flux will cut the connector, the EMF will be induced, and if it is a closed circuit, the current also will be induced. Current in the secondary. Current in the secondary. Okay, here current in the primary. IP. Current in the primary. Okay, कुछ नहीं. When you on, current is varying. That's why magnetic field is also varying. According to Faraday's laws, whenever magnetic flux passing through this coil cuts the coil, the EMF will be induced. If it is a closed circuit, the current also will be induced. Okay. Now here we have a relationship between primary and secondary का coil का. Okay. So that relationship learn करेंगे. Tell me, इसका you tell me derive करेंगे इसका क्या relation है? EMF in the primary is what? EMF in the primary winding is minus d phi b by dt. Rate of change of flux in the primary is nothing but EP. And flux is how much? Number of turns into the, what is flux का formula? ठीक है, एक coil का flux is 5p मान लो, number of turns n है तो n turns, right? So मैं क्या करूंगा, EP is equal to minus n times of np times of d phi b by dt, right? ऐसा रहने दो. Similarly, secondary flux कितना होगा? Total secondary flux is how much? 1 turn का 5 है तो ns turns का ns into 5, ns into 5. इधर भी एक टर्न का 5 मान लो, 5p माने, because same flux will be linked, right? Same flux will be linked with this, so 5 इधर भी 5 आएगा, ns into 5. now substitute करो, es कितना होगा? es is minus ns d phi by dt, right? Now divide these two, ns, this is the first equation, this second equation. So what is es by ep will be how much? Es by ep will be this upon this. So ns by np. देखो, if you understood that direct relation है, more the number of turns, more the secondary voltage. Okay, so this is the formula we use. This formula आपको आने पड़ेगा. Es by ep मतलब secondary voltage, this is es, right? Secondary voltage induced in the coil, es by ep is equal to ns by np. This formula we have to learn. That means E is proportional to N. उसी के बेस में that means E is proportional to N, right? तो उसी के बेस में we have two types of transformers, step up and step down transformer. Tell me, step up में ES is greater than EP या ES is less than EP या? Step up बोल तो ज्यादा है secondary में, so ES is greater than EP. So NS is greater than that relation NP. It's called step up transformer. And step down में, step down है ना, so ES is less than EP, therefore that relation है ना, NS is less than NP. That's why secondary में थोड़ा कम टर्न्स करेंगे. इसमें 1000 टर्न्स है तो उसमें 500 टर्न्स किया तो वोल्टेज विल बी रिड्यूस्ड. ओके, नाउ इन पावर ट्रांसफार्मर, बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर में आपको क्या होगा, देखो, दिस इज अ प्राइमरी वाइंडिंग, इज सेकेंडरी वाइंडिंग, राइट?
IP, EP, IS, ES. Okay. Now here you have to understand always like ideal transformer you're talking. Power transformer is nothing but ideal transformer. There's no losses. Ideal transformer. This condition is true only for ideal transformer. Transformer का symbol I'm putting like this, cross transformer, danger symbol, transformer. Okay. So इसका always for ideal transformer, power input is always equal to power output. So power का formula, voltage into current, right? EP into IP is equal to ES into IS. So therefore, what is ES by EP is equal to IP by S. देखो ये inverse relation है, current is inverse relation. That's why secondary voltage बढ़ गया तो current will be reduced in the secondary. So that power is same constant. That means E is inversely proportional to current. So therefore आपको ट्रांसफार्मर में एक फॉर्मूला रहने का, that's it. एक फॉर्मूला क्या है अब बेटा? Okay. So एक फॉर्मूला याद रखो ये वाला, एन ES by EP is equal to NS by NP, a direct relation है, and IP by S. IP by IS is useful only for ideal transformer. Ideal transformer. Then only we condition this one we have to use. Otherwise, normally if there losses or kuch hai to we can't use this formula. This is true always. ES by EP equal to NS by EP. एंड इसको क्या बोलते हैं मालूम है? टर्न्स रेशियो बोलते हैं. ट्रांसफॉर्मर रेशियो और टर्न्स रेशियो. ट्रांसफॉर्मर रेशियो और टर्न्स रेशियो. टर्न्स रेशियो एंड वी रिप्रेजेंट टर्न्स रेशियो एज के. के से रिप्रेजेंट करेगा. समटाइम्स दे विल डिफाइन टर्न्स रेशियो मींस एनएस बाय एमपी. सो फॉर्मूला आ गया ना. एंड पावर का फॉर्मूला मतलब मालूम है ना? पावर इज ऑलवेज पावर इनपुट पावर मींस आपको क्या करना है? ईपी इंटू आईपी करने का. आउटपुट पावर मींस सिंपली ES into IS. And Ohm's law is valid कभी भी. VI equal to V by R ऐसा. Okay. So ES by EP, P is primary, S is secondary. NS by EP, direct relation है. And this is useful only for ideal transformer. There is no losses means that we have to use IP by A. Then only we can equate. Okay. क्या करो? Diagram आपको याद रखने का always. Right? This is a core software, soft iron core, and this is ES, and this is a load.
got it, कर रहा. So the number of turns in secondary is 22 into 10 power 3. 2 into 10 power of 3. 22 into. Oh wait, no, that's voltage. NS 10 100. power 4. 10 power 4. 10 power 4. See, simply number of turns in secondary is NS by NP is equal to ES by EP. And he has given turns ratio, K value is given, right? So K is 10, 100. So this also given, right? Also, the primary coil का turns is given. 10 power 4. So NS is 10 power 4. Okay. Next, सात्विक आया आपको current in the primary, IP. So is it 5? 5 amperes. Next, third one, voltage across secondary. 22 into 10 power 3. 22,000 volts. देखो step up और step down ये वाला. Primary में 220 volts only. ये वाला 22,000 volts. तो कितना high voltage बढ़ गया? So that is step up transformer. Next, current in secondary. बोलो. Anybody? 0.05. 0.05 amperes. Next, and this one, power in secondary. Power in this ideal transformer, right? Power in primary equal to power in secondary. Okay. So transformer has 500 turns in the primary. NP is given and NS is given. Second, the primary voltage is given as 200 volts. And the load of is load as resistance, right? Resistance they given as 100 ohms. कुछ नहीं ohms ला लगाना पड़ेगा कुछ नहीं. IS. Calculate the current in the primary. IP चाहिए. Assume is the ideal transformer. मतलब ES आ जाएगा ना from this ohms ला V को IR लगाए तो we'll get ES. Doesn't calculate the current in the primary. IP चाहिए, that's it. So we know only one formula. ES by EP is equal to NS by NP. Since is the ideal transformer, IP by S. So first ये दोनों equate करो. आपको ES आ जाएगा. आने के बाद IS we can find from this because ES and R ohms लगा था IS can get right. From that IP Okay, also. so 8. Yes, 8 amperes. Yes, 8. Yes, that. Now efficiency of transformer. Sometimes efficiency कितना बोलेगा? Efficiency is nothing but eta से डिपेंड करेगा. Simply power output
by power input into 100 is called efficiency of a transformer. Okay, like in this transformer क्या होगा, ES into IS by input power is EP into IP into 100 is efficiency. Like generally transformers का percentage will be like more रहेगा 99 point general life में. Okay, so when they given percentage में we can't use the relation IP by S बोल के we can't use, because efficiency is not 100%, right? Efficiency 100% is ideal transformer without losses. Okay, the current drawn by the primary of the transformer which step down to this much resistance is given. Assume efficiency of a transformer is 80%. मतलब it is not an ideal transformer. So he's telling to find what current drawn by the primary of the transformer. मतलब asking IP. So 0.125 ampere. Yes, 0.125 amperes. Efficiency formula क्या है? 80 is equal to ES into IS by EP into IP into 100. So from this you can find IP, right? चलो. Now we'll see the losses, energy losses. Just like we have copper losses because it is made up of input wires are there, output wires are there, right? Some losses, heating effect, I square R losses will be there. So that's why the efficiency is not exactly 100%. Okay. Somewhere. Next one is flux leakages. I told you the same flux will be coming to and linking with the secondary, but some of the flux will be leakage हो जाएगा. So the total 100% flux is not linking with the secondary. Flux leakage भी हो रहा है. That's why efficiency is not 100%. Okay. So लोग क्या करेगा, थोड़ा reduce करने के लिए क्या करेगा, एक coil के ऊपर दूसरा coil भी रखेगा. Okay. So they'll take like this total. So एक प्राइमरी कॉइल उसके ऊपर सेकेंडरी कॉइल रखेगा पूरा, मतलब दिस इज अ प्राइमरी कॉइल एंड उसके ऊपर अगेन दे विल पुट द सेकेंडरी कॉइल इन द लिम्ब. दैट्स व्हाई फ्लक्स लीकेज विल बी रिड्यूस्ड, सो थोड़ा एफिशिएंसी बढ़ जाएगा. एंड कॉपर लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करेंगे, देखो आई स्क्वायर आर, राइट, आर इज इक्वल रो एल बाई ए. सो एरिया को आपको रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने के लिए एरिया को इंक्रीज करना पड़ेगा. The wire which we are using, that area ko we are increasing so that resistance will reduce, so that copper losses will reduce. Okay, of a transformer ka. And next one is eddy current loss. Eddy current loss मालूम है ना आपको? Tell me what is eddy current loss? याद है? Circulating currents. Because of changing flux will linked with the conductor also, right? Not only coils, it will linked with the soft iron core also. ओके उसके वजह से क्या होगा, द करंट्स विल बी इंड्यूस्ड, उसके वजह से द सर्कुलेटिंग करंट्स विल बी कमिंग इन द कोर में, देयर विल बी हैविंग सर्कुलेटिंग करंट्स विल बी कमिंग इन दिस.
because the changing flux is linking with the this soft iron core also. There is also connector only. That's why circulating currents will be coming. उसके वजह से क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा, उसके वजह से उसका लाइफ स्पैन कम हो जाएगा. सो आपको क्या करने का, रिड्यूस करने के लिए वी हैव टू पुट लैमिनेशन. लैमिनेशन मतलब एक, इंस्टेड ऑफ वी आर यूजिंग द सॉलिड ब्लॉक के वजह से, सॉलिड ब्लॉक वी शुड नॉट यूज. सो वी हैव टू यूज फर्स्ट लैमिनेट, उसके ऊपर वन मोर लैमिनेट, ऐसे लैमिनेट करके विल मेक ए वन सॉलिड जैसे बनाएगा. एंड एक लैमिनेशन दूसरे लैमिनेशन के ऊपर देयर इज ए कोटिंग, कारलेट कोटिंग बोलते हैं. इट इज एक्टिंग लाइक ए इंसुलेटर सो दैट द करंट कैन नॉट एंटर इनटू द अदर कनेक्टर के लिए. ओके मतलब 3D में से 2D बना रहे, सो दैट द करंट गेट रिड्यूस. ये डिफरेंस रहेगा थोड़ा, बट 3 डायमेंशन में ज्यादा करंट आएगा, ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं, थोड़ा कम हो जाएगा लैमिनेशन करने के लिए. सो एडी करंट्स ऑलवेज रिड्यूस करने के लिए वी रिड्यूस लैमिनेशन ओनली. ओके. एंड लास्ट वन है हिस्टेरेसिस. हिस्टेरेसिस एसी यूज कर रहे हैं ना, उसके वजह से क्या होगा, द एटम्स विच आर देयर, द मॉलिक्यूल्स विच आर देयर इन दिस आयरन कोर, एक बार पॉजिटिव में ऐसे जाएगा, एक बार ऐसे जाएगा, एक बार ऐसे जाएगा. सो मूवमेंट की वजह से देयर इज ए हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा. हिस्टेरेसिस लॉसेस we can't eliminate. So generally we are use material, nice material like soft iron core we are using, so to reduce those. उसका reduce कैसा रहेगा, ग्राफ कैसा रहेगा मालूम है ना, ऐसा था, बाद में ऐसा था, ऐसा आएगा. The cycle will be repeated. The area under the cycle is nothing but the losses. Hysteresis loss बोलते हैं. इतना लगेगा. So एक एक कोर का एक एक बड़ा लॉस रहेगा. So we have to use minimum loss वाला, that is soft iron core we are using to reduce the hysteresis loss. So by this, your complete chapter is successfully done.